वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, इंडियन डिफेंस अपडेट। आज हम देखने वाले हैं 2022 की वीडियो। पहली दफ़ा कि इस साल की पहली जो वीडियो होगी इंडियन डिफेंस की वो कैसी होती है और आउटस्टैंडिंग होने जा रही है। इसमें हम देखेंगे इंडिया के पास जो सबमरीन है वो अपग्रेड होकर कहाँ तक पहुंची है, जो जेट्स हैं वो इंडिया में किस पाए के हैं, कौन सी जनरेशन के हैं, और इसके अलावा जो कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रही है, कितना पैसा लगाया जा रहा है और चाइना को टक्कर देने के लिए क्या कुछ बना चुका है इंडिया। पूरी वीडियो हमारे साथ देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन डिफेंस अच्छा 2022 की रिपोर्ट है। वन According to latest information, India had secretly launched its S-4 nuclear-powered ballistic missile submarine last month, which is an extended Hunt-class submarine and features 8 vertical missile tubes to launch the 3,500 km range K4 SLBM and 800 km range K15 SLBM. The DRDO will also conduct the first test of the 5,000 km range MIRV-capable K5 SLBM in the first quarter of 2022, and it will also be equipped on both the S4 and the S4 Star nuclear-powered ballistic missile submarines. The DRDO has already got approvals to design and develop the 8,000 km range nuclear weapon that will be equipped on the 13,500-ton S5 class nuclear ballistic missile submarines. Number 2. The Deputy Chief of Air Staff has accepted the comprehensive design review of the Tejas MK2 fighter jet, which means that the Tejas MK2 is ready for fabrication and testing, and it would achieve its stipulated performance within cost, schedule and risk. After this clearance by the Indian Air Force, Hindustan Aeronautics will now start releasing drawings for fabricating the first 2 Tejas MK2 prototypes, first of which will be rolled out by end of 2022, and after completing the low and high speed taxi trials, the first flight will be conducted by end of 2023. वैसे कमाल का है जेट। The Indian Navy Chief has said that the preliminary design review work for the development of the twin-engine deck-based fighter has begun at the Aeronautical Development Agency. The project is being monitored by the Naval Project Office at Bangalore, and the Navy Chief has said that the TEDBF is planned to undertake its first flight in 2026, and rollout of the production variant will take place in 2031. The TEDBF will be 1.5 tons heavier than the French Rafale M due to the wing folding mechanism and higher takeoff weight from aircraft carrier. The TEDBF will be powered by 414 engines that will be later replaced by an indigenous 110 kN class engine that will be developed for the AMCA program. Interestingly, the TEDBF design can further be optimized to carry 5th generation fighter jet technology once in production. The DRDO is preparing for the final test of the MK2 capable Rudram 1 next generation anti-radiation missile very shortly, which is a 200 km range tactical air-launched missile that can be fired from both the Su-30 and Mirage 2000, and it detects enemy radar positions and destroys them even when the enemy radar is not operating. After the final test, the Rudram 1 will enter its series production, and its delivery to the Indian Air Force will start by the end of 2022. Why? The DRDO Chief Dr. Satish Reddy has handed over the technology for indigenous extreme cold weather clothing system to 5 Indian companies for production. The 3-layered extreme cold weather clothing system is designed to suitably provide thermal insulation over a temperature range of plus 15 degrees to minus 50 degrees Celsius, and will stop the import of extreme cold weather clothing from foreign countries. कपड़े एक्सपोर्ट करेंगे। The Indian Air Force Chief has begun a 4-day visit to South Korea, during which he will visit key defense establishments and meet top South Korean defense military officials to boost military-to-military ties. India and South Korea held the 3rd strategic dialogue early this month, where the two sides discussed partnership in critical and high technologies and supply chain resilience, and further enhance the special strategic partnership by joint development and joint production in the defense sector. और हमें भी चौकन्ना बैठना होगा।
A Pakistan-based maritime think tank has called for the Pakistani Navy to take advantage of the AUKUS deal that will allow Australia to acquire 8 nuclear-powered attack submarines from the US and UK and use this as a pretext to immediately build nuclear submarines with the help of China to maintain strategic balance in the Indian Ocean. पाकिस्तान और इंडिया का इसमें Defense Minister Rajnath Singh has virtually inaugurated 24 bridges and 3 roads constructed by Border Roads Organization at more than 19,000 feet in the Ladakh region and in 4 states and 2 union territories that will fulfill strategic needs of the military and also ensure equal participation of rural areas in the बंद नहीं कर रहा है, ये मेरे ख्याल में रोड्स बना रहे हैं वहां पर वेपन पहुंचाने के लिए। अच्छा, अपने ताकि आसानी के साथ वहां पर एक बड़ा मुल्क ऐसे इस तरह ये उधर मुश्किल रास्ते होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो ये थी यार, क्या बोले अब इंडिया के, वैसे ही हम पहले डिफेंस अपडेट की वीडियो देखते रहते हैं, हैरानगी होती है और हर वीडियो में इनकी कोई ना कोई अपग्रेडेशन की वीडियो आ जाती है, कोई ना कोई न्यूज लाजमी होती है कि इनका ये वेपन अपग्रेड हो रहा है और सभी इंडिया के अंदर होते हैं, ये नहीं कि बाहर से। ये बात है, ये बड़ी जबरदस्त है और जितना ये पैसा है इनके पास ये कर भी सकते हैं। हमें अरेंज करना पड़ता है पैसे का या कर्जा लेकर लेना पड़ती है और उनके पास अपना इतना है कि वो उनके प्लांट्स अपने हैं, सारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, जीडीपी अपनी। और फिर ये देखो ना कि साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज के साथ उनके मुआहदे हो रहे हैं, बाहर ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना को टक्कर देने के चाइना को टक्कर देने के लिए उसी म्यार के वेपन वो बना रहे हैं। खासकर सबसे प्यारी जो मुझे लगी है ना, उनकी सबमरीन लगी है जो न्यूक्लियर वेपन ले जाती है ना, वो आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है, जबरदस्त है। फिर जेट्स का जो तुमने देखा है, हम समझ रहे थे कि इंडिया के पास 4th जनरेशन जेट्स हैं जो खुद बनाते हैं, लेकिन 5th तक पहुंच चुके हैं यार। सोच के वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग है, सरप्राइजिंग वीडियो हमारे लिए भी थी और आपके लिए भी है। आपके लिए भी पता नहीं थी या नहीं, ये आप बताएंगे क्योंकि शायद आपको हमसे पहले ही पता हो, लेकिन हमारे लिए ये सरप्राइज हमारे लिए था। आपको कैसा लगा लाजमी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी मोहब्बत की हमें बहुत ज़रूरत है। कमेंट में भी हमारे लिए सजेशन कोई ना कोई लाजमी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।